So, how many people have joined? They लोगों ने join. So I hopefully screen is visible. Today we are going to tell you about the Ramachandran plot. Okay. So as we know, we are going to study the level of protein. Our objective of discussion is today. We will show you we will discuss about the dihedral angle. The peptide bond is, as you know, there is a dihedral angle, torsion angle, right? So how you can calculate the dihedral angle, and then we will study about the Ramachandran plot of lysine, what it predicts, okay? And then we are going to discuss about the secondary structure, right? Secondary structure, and then tertiary structure, tertiary structure, and partnership. So these will be the objective of the discussion today. So hopefully this will be beneficial to you. If we'll see what is Ramachandran plot. Simply we can say Ramachandran plot is between drawing the graph between psi and phi. This is phi, this is the psi. So when we are drawing, you can see here in the diagram, when we are drawing the graph between psi and this phi, we are getting some picture like this. So is Ramachandran plot unique in the sense you are at the plot, you can predict about the possible secondary structure, right? What will be their stability, where they will be lying, there is some allowed region, non-allowed region, okay, and some region for the alpha helix, some region for the beta helix. So we will discuss very soon. So what is the dihedral angle? Let us discuss first, because you know there are primary structure, and tertiary structure. So this is very important when you are going to study the conformation of protein, because conformation of protein is totally related to understanding of peptide. So if I'm talking about this dihedral angle, then what you can say dihedral angle, totally you can say it's about understanding this angle ABCD, right? When you are talking about the ABCD, this angle is ABC, A, C, and CD. This tells you about the peptide conformation, because you know peptide bond is restricted to movement. They are not going to move. So only the R group is going to move, or some kind of freedom is there in the dihedral angles. C, A, B, and this C, and the D. And if you are assuming it as a center, you can move it in the clockwise direction plus, and if you are moving in the anti-clockwise direction, this will be the minus. Okay. So protein backbone especially is described the term of phi, psi, and omega. As you can see here, the phi and C alpha always written as phi. Okay. So you can say phi, or like this phi. Phi, this is NC alpha, and then C alpha C, which is the psi. Okay. And we're talking about the C and N dash, this is omega. So there are three type of dihedral or torsion angle. Take care. Protein backbone can be described in terms of phi, psi, omega, torsion angle of the bonds. Phi angle is the angle around the NCA bond. Already I have told you this NCA bond here.
NCA bond, right? This is visible. Okay, this is the NCA bond, and CA is the alpha carbon, because alpha beta near the function group, you can see here the C alpha, alpha carbon, then beta carbon, and so that is the way of nomenclature. Psi angle is around CAC bond, omega angle is around CN bond. Okay, so this is the amide plane. Side group R is there, which is C alpha C, CN, right? And then NC alpha again, and this is the side chain. By this way, you can understand totally in the amide plane how we can see the rotation of the peptide bond. Right? The peptide bond, you can see C O N H. So there is a restricted movement around the double bond. Always there will be allowed movement around the single bond. Okay? So we are going to understand what is the impact of this. The impact of this bond is that both phi and psi is going to have the rotation around 180 degree, right? So note that this is a fully extended state, and this minus 180 to plus 180 movement shows fully extended and planar conformation, right? So what you can see, the phi minus 57 and psi 7 degree, which is a right-handed helix. Right-handed. And if this is plus, this is minus 57, minus 47. And if the phi is plus 57 to plus 47, this will be the left-handed helix. Now phi 139 to psi 135 is called as the anti-parallel beta seat. By minus 19 degree to plus 113 degree is the parallel beta seat. So you have to remember the phi and psi angle. This is very important. Will you remember? Hello, am I audible to all of you? So phi 57, minus 57 to minus 47, this will be the right-handed helix. Right-handed helix. And this plus region 57 degree plus 47 degree will be the left-handed helix. And parallel beta seat minus 119 to 113 will be the parallel beta seat. Okay, and minus 139 to plus 135 anti-parallel. Okay, so 139, 135, 119, 130. 139, 135 याद रखो, minus 139 to plus 135, minus 119 to plus 113. Okay. So secondary structure of the protein. Before starting with that, I should tell you exactly what is the Ramachandran plot as discussion. आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रामाचंद्रन प्लॉट है. तो इफ यू सी रामाचंद्रन प्लॉट में क्या होता है कि हमेशा ऑलवेज वी आर गोइंग टू मेजर द फाई एंड साई एंगल, जैसा कि हमने बताया फाई एंड, ठीक है, फाई एंड साई एंगल. So now the two torsion angle of the polypeptide chain describe the rotation of polypeptide molecule. Actually में हम देखते क्या है
इसमें कि फाई और साई के बीच में क्या एंगल ऑफ रोटेशन है, व्हाट इज एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन। तो ये इसके आधार पे बताते हैं कि दिस विल बी द लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स और राइट हैंडेड हेलिक्स और पैरेलल बीटा सीट और एंटी पैरेलल बीटा सीट, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर डायहेड्रल टार्सियल प्रोटीन, डायहेड्रल टार्सियल एंगल यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो दिस इज द प्रोटीन एंड इस प्रोटीन का मूवमेंट यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका क्या मूवमेंट होगा एंड दे विल बी स्टेबल इन द स्ट्रक्चर और नॉट, एट विच एंगल। तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगा के जैसे प्रोडिक्शन हो सकता है, तो दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टार्सियल एंगल एंड डायहेड्रल एंगल, ओके, ठीक है। दिस टार्सियल एंगल which are called as the phi, omega and psi, all these are the what टार्सियल एंगल, इसी को डायहेड्रल एंगल या टार्सियल एंगल भी कहते हैं, ठीक है। ये समझ आ गई सबको, व्हाट इज द फाई, फाई किसके बीच में होगा, एन सी के बीच में, एंड साई सी एन सी के बीच में होगा, ये ध्यान, ठीक है। और जो सी और एन के बीच में होगा वो होगा ओमेगा, दैट इज रेयरली यूज्ड। ये पाइमोर स्ट्रक्चर है जैसा कि हमने बताया था आपको। नाउ यू कैन सी द डिफरेंट रीजन एंड डिफरेंट एंगल। अगर एक दूसरे के अगेंस्ट में मूव करा रहे हैं 135 प्लस माइनस 180, तो क्या वो स्टेबल होंगे, क्या उनका जो साइड चेन है वो इंटरेक्ट जब करेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो नहीं होगा। तो अगर मान लो एक साथ रहेंगे एक ही एंगल पे, तो दे विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस विल बी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। डायहेड्रल एंगल कैलकुलेट करना है इस तरीके से कि देयर विल नॉट बी एनी हिंड्रेंस बिटवीन द फाई एंड साई, साइड चेन में कोई इंटरेक्शन ना हो, क्योंकि जैसे -182 प्लस 180 आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में क्लियरली विजिबल है, दिस इज -180, दिस इज +180। तो ये प्लेनर एंड कंफर्म ओपन कंफर्मेशन है, एंड दिस इज द प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राइड बॉन्ड, दिस इज द पाई मॉडल, ओके। So now you can see these diagonal angle using the pi mode. Okay, pi mode से आप बना सकते हो, and you can move all these things here. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, right? It will be the great. ठीक है, and watch. So now what you can see, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट एंगल दिख रहा होगा, -139, 135 जैसे किया था। बीटा सीट का रीजन है, अल्फा सीट का रीजन वो अलग बताया था, -57 +57, राइट एंड लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स के लिए ये प्रोडिक्शन इजी हो जाता है। जैसा कि मैं फिर से दिखा देता हूँ कि क्या हमने डिस्कस किया था। -57 टू -47 जो था वो राइट हैंड हेलिक्स, +57 टू +47 लेफ्ट हैंड हेलिक्स का, ठीक है। वही चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, -139 +135 एंटी पैरेलल, यहाँ -139 +135 एंटी पैरेलल, दिस इज व्हाट यू कॉल देम एज एंटी पैरेलल, ठीक है। दिस विल बी द एंटी पैरेलल, ये वाला, ठीक है ना। और 113 वाली जो बात थी वो पैरेलल के लिए हो, राइट। तो ये रीजन है, and you have to remember these angles for the different proteins. Now you can see अगर आपको बॉल स्टिक मॉडल से समझना है what is phi and psi, तो you can understand this diagram. तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो phi and psi, ठीक। अब अगर आप यहाँ पे देखो रामचंद्रन प्लॉट को फुल्ली मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी आता है। CSIR की कंपटीशन के लिए लाइव स्ट्रीमिंग डेली होती है, 7:30 ऑनवर्ड्स होती है डेली, ठीक है। तो आप जो लोग भी वॉच कर रहे हैं तो दे कैन सब्सक्राइब, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं,
लाइव स्ट्रीमिंग कभी कभी होती है, तो डोंट रिलाई ऑन लाइव स्ट्रीमिंग एवरी डे। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओनली 50 रुपीज पर डे की क्लास है, ठीक है ना। तो यू कैन व्हाट्सएप में, यहाँ पे मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एंगल आप ना मेजर, पैरेलल बीटा सिस्टम की बात, एंटी पैरेलल बीटा सिस्टम की बात करी थी। सीएसआर में कोलाइजन ट्रिपल हेलिक्स का एंगल पूछा हुआ था, किस रीजन में होगा, रीजन पूछते हैं, राइट और ट्विस्टेड बीटा सीट्स, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का रीजन यहाँ पे है। ये अक्सर पूछा जाता है कि ये कौन सा ना फाई और साई का एंगल है, तो दैट यू हैव टू टेल। तो आपको ये देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। हाँ, ये रीजन इजी है याद करना, बिकॉज ऐसे बना सकते हो। आप यहाँ से देखो ध्यान से, तो दिस इज -80, ठीक है, दिस इज +80, यहाँ भी -80, दिस इज +80, इन बिटवीन दिस इज अ 0, ओके। तो ये -180, -120, -60, 0, फिर 60 आ गया, आ गया +1, प्लस रीजन, सारा प्लस रीजन, ठीक है। प्लस रीजन मैंने क्या बताया था, क्लॉक वाइज मूवमेंट, और ये जो होता है एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो कोई दिक्कत आती है तो आई विल टेल यू, डायग्राम क्लियर है। हाँ, यू कैन सी सेम है, दिस इज एन टर्मिनल ऑफ द प्रोटीन, आई थिंक दिस इज क्लियर, एन टर्मिनल, एंड दिस इज द सी टर्मिनल, और ये सारा इसी रीजन में या इस रीजन में हो रहा है, ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा। डबल बॉन्ड जहां भी होगा दे आर नॉट गोइंग टू मूव एट ऑल। तो जो मूवमेंट पॉसिबल है ना, सी अल्फा सी के बीच में पॉसिबल है, सी एन के बीच में पॉसिबल है, एंड एन सी अल्फा के बीच में पॉसिबल है। दिस इज द पाई, सी अल्फा सी इज द साई, ये देखो साई है, और फाई क्या है, एन सी अल्फा, अल्फा इज द, सी अल्फा इज द पाई, ठीक है। सी अल्फा सी क्या है, साई, और सी एन क्या है, ओमेगा। तो यही हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इसको याद कर लीजिए। रामचंद्रन प्लॉट क्या है, दिस इज द प्लॉट बिटवीन द पाई डिग्री, साई डिग्री एंड वर्सेस पाई डिग्री। 5 डिग्री ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे होगा, और ये पाई। बेटा कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछना, है ना। एंड आपको ये अक्सर एग्जाम में मिल रहा है आजकल, व्हील, व्हील ये देते हैं, दिस इज अ व्हील, पेप्टाइड व्हील इसको बोलते हैं। पेप्टाइड व्हील के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, 855609, आप लिख देता हूँ 5 इस पे व्हाट्सएप करिए, then I will tell you the detail, and this is also the same thing almost. I can show you exactly what is this. फिर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर को मैं नीचे कर दे रहा हूँ, तो now you can understand totally, ये व्हील आप समझ, ठीक है। तो ये एंगल है, राइट, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली, इसमें क्या है बेटा, यू कैन सी द एंगल इज देयर ना, 0 से स्टार्ट किया, फिर इधर माइनस में जा रहा है, मैंने बताया था ना एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस, ठीक है, और प्लस में जाओ, इधर जाओगे क्लॉकवाइज, दिस व्हील शोज पॉजिटिव, यहाँ पे 0, 60, 120, प्लस माइनस 180 जो ओमेगा के अराउंड में रीजन है, याद कर लो अच्छे से, -120, -60, ठीक है, याद हो जाएगा। आई डोंट एनी प्रॉब्लम विद देयर। तो ऑलरेडी बता दिया आपको, फाई और साई के बीच में आपको स्टडी करना है, राइट। फाई क्या है, साई क्या है, साई और पाई के बीच में जो प्लॉट होगा वो होगा रामचंद्रन प्लॉट। तो ये -180, -180, +180,
ठीक है, माइनस प्लस 1, तो ये प्लॉट है बेटा, सी अल्फा सी देन सी एन एंड एन सी अल्फा, ये ध्यान रखो, एन सी अल्फा फाइव एंड दिस इज द साइज। इसी की मूवमेंट को हम व्हील से भी स्टडी कर सकते, ठीक है, राइट। So now you can see here, this is the amine terminal, epoxy terminal, and again the same things we are depicting, psi C alpha C and C alpha is the phi। अच्छे से याद कर लीजिए, and C alpha क्या है, this is phi, and C alpha C क्या है, यह है psi, ठीक। तो आज की क्लास इतना ही। tomorrow we are going to study some more points। ये आपको लाइसिन का दिख रहा होगा, रामचंद्रन कार्ड, ठीक है, एंड नाउ यू कैन सी हियर द फीचर्स, जैसा आपको दिख रहा होगा। पेप्टाइड बॉन्ड इज ऑलवेज 99.6% ऑफ द टाइम इन द ट्रांस कॉन्फिगरेशन, मोस्टली दे रिमेनिंग इन द ट्रांस कॉन्फिगरेशन, ओके। सो फॉर रेयर सिस पेप्टाइड होगा तो क्या लिखेंगे, ओमेगा 0, और प्लस माइनस अगर 180 लिखते हैं तो व्हाट इसका मीनिंग क्या होता है, प्लस माइनस अगर 180 लिखोगे, इसका माइनस क्या, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस 180, इसका मतलब है जो आपका पेप्टाइड है वो ट्रांस है। ओमेगा की वैल्यू अगर 0 है, इन द सिस पोजीशन इज मोस्टली अनस्टेबल, क्योंकि वो पास में आ जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे आते हैं, ट्रांस करोगे तो थोड़ा ऐसे। तो अगर आप ये देखो, पेप्टाइड बॉन्ड एंड पाई साई एंगल, तो वो मैंने डिस्कस कर लिया कि किस एंगल में अल्फा हेलिक्स होगा, किसमें राइट हैंडेड हेलिक्स होगा, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होगा, पैरेलल बीटा शीट होगी, और okay? तो जो अल्फा पेप्टाइड CN बॉन्ड इज नॉट फ्री टू रोटेट, तो अदर सिंगल बॉन्ड इन द बैकबोन में आल्सो भी going to present a hindrance. So depending on the size and charge of the R group, we can decide what will be the phi and what will be the psi. Generally, what is the convention of writing this phi and psi between plus 180 degree to minus 180 degree. And if you're talking about the minus to plus 180, minus 180 to plus 180, अगर आप देखोगे तो दे आर totally extended, means first and fourth amino acid, they are far away from each other because of this angle, minus 80 and plus 180, right? This is a fully extended state of the, right? So sometimes they can ask you, right? Okay. So now we can study what is the secondary structure. Secondary structure is the local folding periodic structure of the protein backbone. Alpha helix was studied by the Linnaeus Pauling and Robert Curry in 1951. There is a different kind of alpha keratin, and if you'll see the property of secondary structure, mostly pitch is 0.54 nanometer, rise is 0.15 nanometer, and you can express it in 3.6 रेजिड्यू और टर्न, यानी 3.6 रेजिड्यू एक टर्न में आते हैं। हेलिक्स फार्मर्स कौन कौन से होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेलिक्स फार्मर आते हैं मेथिओनिन एंड ग्लूटामाइन, मेथिओनिन और ग्लूटामाइन, ठीक है। हेलिक्स ब्रोकर कौन कौन से हैं, प्रोलिन एंड ग्लाइसिन, आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर, दिस इज प्रोलिन एंड ग्लाइसिन, दिख रहा है, राइट। This is the proline and glycine. Helix farmer है मेथिओनिन ग्लूटामाइन, हेलिक्स ब्रेकर प्रोलिन ग्लाइसिन, हेलिकल व्हील एम्फीपैथिक हेलिसेस जो बनते हैं एन, ऐसे चलेगा, सीरीज चलती है ना, एन फिर n+4 फिर n+7, इस तरीके से पूरी एम्फीपैथिक हेलिक्स चलती है। तो आज यहीं तक, इसकी क्वालिटी देख लेंगे, आपका रिस्पॉन्स देख लेंगे, अगर आपको पसंद आएगा तो देन वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू, बाय बाय।
uh,